Good morning, students. So, we have started electric field and completed electric field and electric lines of forces. So electric field is simply space around the charge up to which its electric influence can be experienced, and electric lines of forces represent electric field. Electric field appears in the form of electric lines of forces. So these electric lines of forces, if they are equidistant parallel lines, then they represent uniform electric field, and parallel or not equally spaced represent the non-uniform magnetic electric field. So electric field चार्ज के बाहर का स्पेस है जहां तक उसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस हमको मिल सकता है, और उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही रिप्रेजेंट करती है. तो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज Q by 4 pi epsilon times of R square. This is formula for, if we have to determine the electric field due to a point charge, then we will apply this formula. But if there is number of charges, suppose there is 4 charges, we have to find out the electric field here. Then electric field at this point will be the vector sum of electric field produced by all these charges. Means here direction will play the role, because electric field is a vector quantity. Direction from positive will be taken as outward, and from negative it will be taken inward. So resultant field will be like this. So electric field, its representation, its direction, because the electric lines of forces start from positive, then the direction of electric field from positive will be outward, and for the negative charge it will be inward. So by taking the direction or considering the direction in proper way, we can find out the electric field due to the large number of charges. So our today's topic is an important topic, and our topic for today is electric dipole and dipole moment. Electric dipole and dipole moment. So let us define these two terms and try to understand what is the meaning of the dipole. So dipole, electric dipole is simply an arrangement. किसका अरेंजमेंट? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. So if it is plus q charge, then this has to be negative, equal in magnitude but opposite in sense, and distance between these two is taken as 2a. Means center of the dipole from one of the charges at the distance a, and from the another charge is a, so that this distance between the two is taken to be 2a. Conventionally there is no reason, specific reason for this 2a. Simple reason is that these two poles charges are separated by certain distance, so that we need to know the center of this dipole, and all the distances on the axial line and equatorial line of the dipole is measured from the center of dipole. तो हम इसको कन्वेंशनली लेते हैं, इसका कोई फिजिक्स में कारण नहीं है. इसको ए भी लिया जा सकता था, पर हम अपनी सुविधा के लिए इसको 2a लेते हैं, और इसका कोई परिचय नहीं है. So electric dipole is simply an arrangement of two equal and opposite charges. हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे +2q चार्ज है और
but opposite in nature. So an arrangement of two equal and opposite charges separated by the small distance. Second condition is distance. Here is two charges plus q and minus q, but this is not forming a dipole because there is no separation between the two. So it is necessary that there must be small separation between the two charges, only then dipole is formed. So this is simply definition of electric dipole. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम समझते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। उसमें पोल्स बनते हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट। So this is a physical quantity which is measured as the product of either charge and separation. Here we take the magnitude of charge without considering the sign, magnitude of either charge positive or negative, दो में से कोई सा एक, तो यहाँ पे this is product of these two, charge and separation becomes electric dipole moment. तो dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी है, it is a vector quantity and direction is taken from negative to positive charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन is taken from electric lines of DC start from positive and end at negative. Therefore, direction of electric field is taken from positive to negative, whereas the sign of electric dipole moment, direction of electric dipole moment is from negative to positive charge. So these two terms is there, electric dipole and dipole moment. Important from the examination point of view, question simple आ जाता है, define electric dipole and dipole moment. State whether electric dipole moment is a vector quantity or a scalar quantity. Electric dipole moment is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive charge. So direction का बहुत ध्यान हमको रखना होगा. In the SI unit, we know the formula of electric dipole moment is चार्ज इनटू सेपरेशन। तो फिजिक्स में हमको बार बार मैं ये कहता हूं कि वी नीड टू लर्न द फॉर्मूला, देन वी कैन डिराइव द यूनिट एंड डायमेंशंस फ्रॉम द फॉर्मूला। हियर चार्ज कूलम, डिस्टेंस इन मीटर, देयरफॉर कूलम मीटर becomes the formula of dipole moment. So electric dipole moment is expressed in terms of coulomb meter. Then two more important topics are today with us. One is in physics we need to find out the various expressions. So here is two important expressions. One is electric field or axial line of an electric dipole. Electric field or axial line of an electric dipole, and second case is electric field on equatorial line of an electric dipole. So let us understand first what is axial line. Line joining the positive and negative charge and extended either on right side or left side is axial line. डाइपोल को जो जोड़ती हुई लाइन है उसी को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्योंकि अगर आपको एक्सियल लाइन ही पता नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सियल लाइन। So in order to find out the expression, बाकी सारा काम वही होगा
it is an arrangement of two equal and opposite charge separated by distance 2a. Important point is, पहले मैंने कहा था, distance of any point on axial line or equatorial line is taken from the center of dipole. यही वजह है कि हम डाइपोल का सेपरेशन 2a लेते हैं। यहाँ पे हमको आसान हो जाएगा। फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस इज x, therefore from charge negative q and positive q will be x minus a, and from the positive q charge is x plus a. This is the situation we have to consider when we find out the electric field on axial line of the electric dipole. तो बार बार यही बात हो रही है कि फिजिक्स में जब कोई वेक्टर लॉज फॉलो होते हैं तो हमको फिजिकल क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कंसीडर करना होगा। Therefore, at point P, we have to see electric field from positive charge is directing outward, but due to negative charge, it is directing inward. Due to negative charge, direction towards the negative charge, direction away from the positive charge. So that from this point, at this point we can conclude that electric field will be E1 minus E2. This is again the superposition principle, say that any point electric field due to the large number of times will be the vector sum of all the fields produced by the charge individually. So एग्जाम में जब हम लिखते हैं तो क्या ये सिचुएशन कंसीडर करना है? हम लिखेंगे कि कंसीडर टू चार्जेस, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स को लिखने के लिए, तो आप जब नोट्स बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या लिखना है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। हमने डाइपोल को माना है जो दो चार्जेस से बना हुआ है, उनके बीच का सेपरेशन 2a है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमको लिखना है वो ये है कि लेट P बी एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अभी एक्सियल लाइन है, फिर हम इक्वेटोरियल लाइन कंसीडर करेंगे। P is any point on its equatorial line at a distance x from the center of dipole, then distance from plus q charge will be x plus a, distance from the minus q charge will be x minus a. Therefore, electric field E1, magnitude of E1 at point P will be q by 4 pi epsilon naught r square. R square means x plus a square. Similarly, electric field E2 at point P due to negative charge is same, q by 4 pi epsilon naught x minus a whole square. तो क्या उस फॉर्मूला पे फर्क पड़ा जो हमने पहले एक्सप्रेशन निकाला था? एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंट चार्ज इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज q by 4 pi epsilon naught r square. ये वही रहा जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा। From positive it is x plus a, from negative it is x minus a. Therefore, E1 electric field as at P due to positive charge is this, due to negative charge is this. तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा अलग अलग दोनों चार्जेस से, क्योंकि पहले भी यही बात हुई थी, बार बार यही बात कह रहा हूँ। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को इवेल्युएट करेंगे तो हम उसकी डायरेक्शन को देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन किधर है, क्योंकि उसका एडिशन विल फॉलो द वेक्टर एडिशन। Therefore, हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, at point P, E1 and E2 are in opposite direction. Therefore, resultant electric field E at P is E1 minus E2. Therefore, E equals to q by 4 pi epsilon naught as common 1 upon x plus a whole square x minus a whole square. यहाँ से आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, और फ्रॉम हियर E equals to q by 4 pi epsilon naught as common x plus a x minus a whole square x plus a x minus a whole square x minus a whole square minus
कई लोग y वालों को ये भी पता नहीं चलता, x plus xy whole square can be written as x square into y square. X square y square can be written as xy whole square. X square y square whole square can be written as xy whole square. So that a plus b into a minus b, a square minus b square, and we have q by 4 pi epsilon naught whole square open करेंगे, a square plus b square minus 2ab minus a square plus b square minus 2ab divided by x square minus a square whole square. कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में था, ये फैक्टर कैंसिल हो गया है. नाउ वी आर लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to minus q 4ax upon 4 pi epsilon naught x square minus a square whole square. From here we can write it as E equals to minus 2q into 2a into x upon 4 pi epsilon naught x square minus a square whole square. 2a into q is इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अभी हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन. So from here q into 2a is p. We have 2 mod area में इसका मैग्नीट्यूड, आइदर चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, मॉड से कैंसिल हो गया. 2px अपॉन 4 pi epsilon naught x square minus a square whole square is the value of इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. एक फॉर्मूला बन गया. आपको दो चार्ज दे रखे होंगे एक्सियल लाइन पे, डिस्टेंस पे. सपोज these two charges 1 माइक्रोकूलम -1 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, दोनों सेम रहेंगे बट अपोजिट होंगे. तो 10 सेंटीमीटर इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वी विल फाइंड आउट. या फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमको बोला गया हियर इज +2q चार्ज, हियर इज -2q चार्ज, separation between them is 10 centimeter, electric field at the distance 20 centimeter from the dipole P point पर क्या होगा. तो या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट निकालेंगे, अदरवाइज जो इसमें हमने मेथड फॉलो किया, इससे चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बाहर को, इससे निकालो अंदर को, तो रिजल्टेंट दोनों का अलग अलग निकाल के फॉर्मूला इज q by 4 pi epsilon naught r square. तो ये नॉलेज हमको यहाँ पे जो निकालने का तरीका था वो यही था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इससे निकालो, वो बाहर को होगा, फिर इससे निकालो, वो अंदर को होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो रिजल्टेंट होगा. वहां पर हमने दो चार्जेस को q एंड माइनस q एज्यूम किया, डिस्टेंस को x और a की फॉर्म में एज्यूम किया. यहाँ पर गिवन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर था. तो बेसिक इज कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द चार्जेस. तो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी. एट द सेम टाइम लास्ट ईयर के एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इन प्लेस ऑफ एक्सियल लाइन वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. तो अभी मैंने कहा कि एक्सियल लाइन इज द लाइन produced either on right side or left side of the dipole joining the dipole. But equatorial line is a line transverse to axial line. A line perpendicular to the axial line is equatorial line. So we will assume the same situation. Consider an electric dipole consists of two equal and opposite charges plus q and minus q separated by distance 2a. Then P is any point on the equatorial line. So this is the equatorial line of the dipole. This is C, center of the dipole. This is point P at the distance x. Now we need this distance. Important point is
इस चार्ज से यहाँ पर कितना फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगा। हियर चार्ज इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, चार्ज इज सेम, distance is same, therefore at point P electric field will be E1 equals to E2 equals to Q by 4 pi epsilon x square plus a square under root का square means Q by 4 pi epsilon x square plus a square। यहाँ पे पॉइंट अब आप क्या लिखेंगे, कंसीडर an electric dipole consists of two equal opposite charges separated by distance 2a. P is any point on its axial line at the distance x from the center of dipole. Therefore, distance from plus q charge is x square plus a square under root Pythagoras theorem, x square plus a square Pythagoras theorem। क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव से, डायरेक्टिंग आउटवर्ड। ये बात बार बार हमको ध्यान रखनी है। E1 is directing outward away from the positive charge and E2 is directing towards the negative charge। ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ एल्जेब्रिक सम सोचते तो E1 प्लस E2 माइनस नेगेटिव सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, बट ड्यू टू द डायरेक्शन पॉजिटिव बाहर को जा रहा है, नेगेटिव अंदर को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द चार्ज डायरेक्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर आएगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E1 due to positive charge is directing away from positive charge and E2 due to negative charge is directing towards negative charge. Therefore, E1 and E2 can be resolved into components. E1 sin theta and E1 cos theta. Similarly, E2 sin theta and E2 sin theta. So here these two components E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, cancels each other। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा E1 sin theta and E2 sin theta cancel each other and resultant electric field is therefore E equals to E1 cos theta plus E2 cos theta ये सिचुएशन है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी अच्छे से कि यहाँ पर जब हम पॉइंट P पे देख रहे हैं तो E1 बाहर को जा रहा है, E2 अंदर को आ रहा है। Therefore, E1 and E2 can be resolved into components along x-axis and y-axis। E1 का एक कंपोनेंट E1 sin थीटा ऊपर को आ गया, बट E2 का एट द सेम टाइम नीचे आएगा। E1 और Y2 क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, कैंसिल हो गए जबकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। Therefore, electric field will be E1 plus E1 cos theta plus E2 cos theta, but E1 equals to E2, therefore या तो हम E1 cos theta लेंगे या फिर 2E2 cos theta लेंगे, because E1 equals to E2, magnitude of E1 equals to E2, therefore resultant electric field equals to E1 cos theta equals to, now E is Q by 4 pi epsilon x square plus a square cos of theta. Now from this triangle we can find out cos theta. This separation is a theta perpendicular base and hypotenuse. From this triangle cos theta equals to a upon
x square plus a square. Therefore, from this equation, E equals to q by 4 pi epsilon naught A upon 2qa upon x square plus a square power 3 by 2, or q into 2a is p, therefore E equals to p upon 4 pi epsilon naught x square plus a square raised power 3 by 2. So this is expression for the electric field on equatorial line of electric dipole, which is most important from the examination point of view. और बहुत आसान है, बहुत थोड़ा सा ध्यान में work on the concept. Here we need to know how to find out. We know the formula to find out the electric field into a point charge. Then these are the point charges separated by certain distance. Then from first we will calculate the electric field into one charge, then electric field from the other charge, then we will see the direction, because electric field is a vector quantity. So if we do not consider the direction, answer will definitely be wrong. So we need to be extra careful about the physical quantity, and we have to see properly whether the physical quantity we are dealing with a वेक्टर और स्केलर. सो बेसिक कंसेप्ट अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करें जानने की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by the small distance, which is taken to be 2a. Here one positive charge, another negative charge. Here is one more term, electric dipole moment, which is the product of either charge and separation. So q into 2 is the formula. It is again vector quantity directing from negative to positive charge. So electric field का direction is taken from positive to negative. Dipole moment is taken from negative to positive. Here on the axial line, at any point P on the axial line, electric field will be the vector sum of electric field of positive charge, electric field of negative charge. Clearly here E1 is directing outward, but E2 is directing inward towards the negative charge. Therefore, here net electric field will be E1 minus E2. Similarly, a equatorial line is a line perpendicular to the axial line. Here again, separation remains same. Distance is measured from the center of dipole. Here this distance is x. This is therefore x square plus a square under root. Therefore, E1 is directing outward, but E2 is directing in this direction. Resultant of these two will be in this direction. First we need to resolve into the component. E1 sin theta, E2 sin theta vanishes, and E1 cos theta, E2 cos theta in this direction. Therefore, we can find out the expression for these two. Now the next important topic, which is again very important, as well as behavior of electric dipole. In uniform electric field. Again, the uniform electric field is represented by equidistant parallel lines. This is the situation. Behavior of electric dipole in uniform electric field. So electric field uniform is represented by equidistant parallel lines. Here is the situation. So we will write down, consider an electric dipole consists of two equal and opposite. Dipole is an arrangement of two equal and opposite charges. An electric dipole is placed in uniform electric field
at an angle theta with the direction of electric field. तो बिहेवियर मीन्स डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इट मीन्स ये कहीं पॉजिटिव से शुरू हुआ है और नेगेटिव की तरफ को जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज will move towards the negative and negative charge will move towards the positive. This dipole will rotate. So behavior means electric dipole when placed in electric field it experiences torque which rotates the dipole. Now the question is, if the electric field is non-uniform, then in non-uniform electric field, important point is dipole experiences both net force as well as the torque. But in case of uniform electric field, it experiences only torque because net force, positive QE and negative QE cancels each other. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान से सुनेंगे सारी चीजों को, पूरा पेपर और एक्स्ट्रा काम वो नहीं कर सकता है जो हर चीज को ध्यान से सुनेगा। तो here there can be a question from this in generally normally appear in the examination that when dipole is placed in uniform electric field, then we have to state whether it experience only force, only torque, both electric field as well as force, and none of this. The answer is in uniform electric field dipole experience only torque but net force is 0. So because these two charges are equal but opposite, experience force equal in magnitude but opposite in sense. Opposite in sense means positive move towards the negative charge and negative move towards the positive charge, which rotate the dipole, constitute a couple and rotate the dipole. When the dipole is rotated, then torque is produced. तो अगर सिंपल क्वेश्चन हमको यहाँ से समझना है कि what is the how can we explain the behavior of electric dipole in uniform electric field, तो सिंपल हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना है, उसका एक डायरेक्शन है और वहां पर हमने डाइपोल